Hello dear friends, welcome back. Today in this video part 4 I am going to create the data frame from dictionary of list. Okay, so first of all we will create a dictionary and that dictionary of list, and thereafter that dictionary of list will be passed as parameter to the data frame function, and your data frame will be created. Very simple it is, and it is the common method that generally students use to create the data frame. So let us go to the code window. Here you have to import pandas as pd dlist dictionary of list. A variable has been taken where name is a column, four names. It is dictionary symbol of list, that means एक list भी इसके अंदर involved है. You can take many more like comma. I have taken say roll number, press enter, roll number colon, and you give list of roll numbers. Take care that the length of list must match with the length of list of previous column. You can say यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाली लिस्ट की लेंथ और इस वाली लिस्ट की लेंथ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट मस्ट बी सेम. अनदर कॉलम कैन बी क्रिएटेड. अच्छा, ये जो आपके keys हैं, see this is the key and this is the value of the dictionary. Value becomes the column content and this keys becomes the column heading. ठीक है, डाटा फ्रेम का जो कॉलम हेडिंग हो जाएगा, नेम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, और ये सारे उस पार्टिकुलर कॉलम के कंटेंट. दिस डाटा विल गो इन द पार्टिकुलर कॉलम अंडर नेम and this data set will go under roll number column. Take one more column, say class. So you can define class as a key and thereafter class, say 12th A, 12th A, 12th B, again 12th A, then 12th C, right? So as many column as you want to define, you can define in this way as a list, dictionary of list, where keys becomes the column name of the data frame and list of values becomes the values under certain column. यहाँ लास्ट में डिक्शनरी क्लोज कर देना है. ये डेटा सेट इज रेडी दैट कैन बी पास टू द डेटा फ्रेम फंक्शन. से df data frame pd dot data frame, the same function as I have used in previous videos for creating data frame using different methods. So dlist, I have passed this parameter to the data frame function and simply the data frame is created. Let us print it and find out whether the data frame is being created or not. इस तरह से आपका डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा. df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये डी लिस्ट इसको आपने यहाँ पास कर दिया. ये सबसे कॉमन मेथड है जनरली जो बच्चे डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और टीचर्स भी इस कॉमन मेथड पर काफ़ी फोर्स करते हैं. इफ़ यू वांट टू क्रिएट द डेटा फ्रेम दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड. सो हमने इसको सेव कर लिया एंड लेट अस सी वेदर द डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड और नॉट. इट विल टेक अ व्हाइल and your data frame is being created like this. See, it was name, first key and its values under this column. Another key was roll number, its values under this column. Third column was class, its values. Suppose you want to add one more column here,
So you can add one more data set in the same way. Suppose you want to write T marks, total marks, and one more column. Out of 500 I have given 345 and 450, 367, 430. तो ये आपने एक सेट और दे दिया. अब फिर से सेव करके फिर से मैं रन करा देता हूँ. अगेन you will see one more column has been added, this one for another data set. ठीक है. तो इस तरह से आपका ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया. दिस इज़ वेरी सिंपल. यू कैन जस्ट सी द कोड अगेन. ये आपका कोड है. डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया है. डिक्शनरी सिंबल बाहर है एंड various lists have been given for the values to be kept under certain column. Thereafter pd.dataframe function है आपका. इसमें dlist you have passed as a parameter. df is created. So that's it about this. So please like and share this video with your friends also, and subscribe the channel if you have not subscribed yet for latest informations, latest videos. Thank you very much for watching.